Morning, students. Yesterday we started new chapter that is planning and sustainable development in Indian context, chapter number 9 of your geography part second book, India, People and Economy. So yesterday we discussed about the word planning. What do you understand by sustainable development? That the development in which we are able to produce or sustained for an indefinite period without damaging environment and without depleting resource. So this is about the sustainable development planning. When we form such type of actions कि हमें ये करना है, we think about something, we make schemes or programs. So this all came under the planning. So for national planning, there is a Ayog or commission, which is Niti Ayog, which formed on 1st of January 2015. और पहले जो था वो कौन सा था, प्लानिंग कमीशन हुआ करता था इसके रिगार्डिंग. So yesterday we discussed about yes, still students are joining. Yes. After that we discuss some approaches of planning, which we discuss two approaches of planning. The first one, that is sectoral planning. Second one, that is regional planning. Sectoral planning is the planning which made in a particular sector, that is agriculture sector, maybe it is transportation sector, maybe communication sector, etc. And regional planning, region here stands for area, and when we make some programs, when we make some schemes regarding development of any particular area, then that type of planning is regional planning for that development. So we discussed about in our last class we discussed about target area planning, in which we targeted one area and make plans for its economic development, make plans for its economy. और which area targeted, कौन से area target करेंगे, they are lag behind डेवलपमेंट के अंदर, जो पीछे चल रहे हैं, या जहां पे बहुत ज्यादा क्या है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या फिर अपॉर्चुनिटीज कम है, तो वो उन एरियाज को plan के regarding. So some of the target area program which we discussed yesterday are command area development program, drought prone area development program, desert development program, hill area development program, the small farmer development agency, the marginal farmer. So small farmer or marginal farmer also we discussed about a small farmer or marginal farmer. तो जो जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, तो मतलब 2 हेक्टेयर बोल दीजिए, चाहे 5 एकर्स बोल दीजिए, जिनके पास 2 हेक्टेयर 5 एकड़ से कम लैंड है, दे आर स्मॉल फार्मर्स. And those farmers are marginal farmers who ओ या फिर जिनके पास जो लैंड है वो आपकी 1 हेक्टेयर से भी कम हो, तो दीज आर मार्जिनल फार्मर. तो 8 5 ईयर प्लान जो है वो किसके रिगार्डिंग था, आपका टारगेट एरिया प्लानिंग के रिगार्डिंग. देयर आफ्टर वी डिस्कस्ड अबाउट द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम. दैट हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो क्या था, उसके रिगार्डिंग हमने बात किया था कल. तो फिफ्थ 5 year plan considered about the hill area development program, and it covers 15 districts, which we discussed in our last class. After that we discussed drought prone area. Drought prone area are those areas which are receiving very scanty rainfall and suffered with the problem of drought. That is a natural calamity. Drought क्या है, natural calamity है. तो ये हमने सब कुछ डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर. So now we are going to discuss this paragraph, that the National Committee on Development of Backward Area reviewed the performance. Sorry, one second. So the National Committee on Development of Backward Areas reviewed the performance of this program. This program यहाँ पे कौन सा है, drought prone area program. Drought prone area program is somewhat working for the development of those areas which are receiving very less rainfall or suffered with the natural calamity drought. तो नेशनल कमिटी जो है वो भी किस पे बनी हुई है, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया. सो these drought prone area are also came into backward area.
सो दिस नेशनल कमिटी जो है, नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, जो इस ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम को रिव्यू करती है, कितना सक्सेसफुल हुआ है, कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है. It has been observed that this program is largely confined to the development of agriculture and um, allied sector with major focus on the restoration of the ecological balance. So what जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है, तो इसका बेसिकली क्या है, किस पे ये ज्यादा फोकस करता है, तो देखिए ड्रॉट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. पानी की ज्यादा जरूरत हमें कहाँ पे, एग्रीकल्चर के अंदर है. तो अब एग्रीकल्चर को किस तरह से क्या किया जाए, इंप्रूव किया जाए, डेवलप किया जाए, जिसमें हमने कल बात भी किया था दैट इफ वी प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटी, तो इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट prone area regarding water for irrigation, water for agriculture. तो उसको क्या करेगी, वो सॉर्ट आउट कर देगी. सो ड्रॉट प्रोन एरिया जो है, उसमें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में क्या आ जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री आ जाता है, डेयरी फार्मिंग आ जाता है. तो दीज आर एलाइड सेक्टर. तो और मेन रिस्टोरेशन क्या करना है, इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या करना है, सेट करना है. तो इकोलॉजिकल बैलेंस यहाँ पे क्या होगा, दैट इज नॉट हार्मिंग द एनवायरमेंट. ऐसा बैलेंस डेवलप कर लेना कि एनवायरमेंट क्या रहे, कंजर्व रहे, एनवायरमेंट को हार्मफुल ना हो, नॉट हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, दैट इज इकोलॉजिकल. Now, ecological, yes. The national committee हमने डिस्कस कर लिया. However, growing population pressure. अब क्या है, मेन जो प्रॉब्लम आती है वो है पॉपुलेशन प्रेशर की. तो एज वी ऑल नो दैट इंडिया की जो पॉपुलेशन है, दैट स्टैंड्स ऑन सेकंड, इंडिया स्टैंड्स ऑन सेकंड प्लेस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. अगर बात करता हूँ पॉपुलेशन का, तो फिर इंडिया सेकंड प्लेस पे. तो पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से क्या है कि ऐसे लैंड सर्फेसेस which are not supporting or which are not favorable for any economic activity, चाहे वो फिर आपका एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे फिर वो आपके इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग हो. तो ऐसी लैंड जिसे हम बोलेंगे मार्जिनल लैंड, दैट आर not suitable for even for any economic activity, तो उसको भी क्या करना पड़ रहा है, यूज में लाना पड़ रहा है. उसमें भी क्या करना पड़ रहा है, आपको यूज में लाना पड़ रहा है. So watershed development is the conservation and judicious use of all the resources within the watershed area. And watershed area is the catchment area, an area of land that drains all the streams and rainfall to a common outlet, that is watershed. Now, the restoration of the ecological balance between water, soil, plants, and human and animal population should be a basic consideration in the strategy of development of drought prone area. So drought prone area में केवल और केवल ये नहीं है कि if we are only providing water for the irrigation, that is only ये नहीं होगा. इसके अंदर जितना भी water है तो उसको कंजर्व करना है, सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, प्लांट्स जो है वो अफॉरेस्टेशन करना है, ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन जो है उसके रिगार्डिंग भी प्लानिंग होनी चाहिए. Now the next paragraph, look at the next paragraph. Yes, the Planning Commission of India 1967 identifies 67 districts, entire or partly. What do you understand? Entire means if I'm talking about Bikaner, if I'm talking about the entire बीकानेर मीन्स यहाँ पे बीकानेर प्लस बीकानेर में जितने गांव, तहसील, सब कुछ जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, सारी की सारी इंक्लूड हो जाएगी. और अगर मैंने बात किया 67 डिस्ट्रिक्ट पार्टली मतलब बीकानेर हो गया. बीकानेर के अंदर मान लीजिए हमने नोखा वाला एरिया नहीं लेके कौन सा लिया, सिर्फ लोनकंसर वाला एरिया ले लिया, तो कहने का मतलब एक पार्ट उसका लिया, पूरा कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट नहीं लिया. सो द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1967, प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन 1967, आइडेंटिफाइड 67 districts of the country prone to drought. तो ऐसे 67 districts हैं, those are receiving very scanty rainfall or insufficient rainfall for the agriculture. तो उन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया the irrigation commission, the commission on the irrigation commission introduced the criterion of 30% irrigated area and demarcated drought prone area. अब irrigation जो commission था उसने उन districts में 30% एरिया को इरिगेशन फैसिलिटी के अंदर लाने का क्या रखा, प्लानिंग की टारगेट रखा.
So broadly, the drought-prone area in India includes semi-arid, semi-arid and arid. What do you understand? What is the difference between semi-arid and arid? Semi-arid, which are receiving less than 25 centimeters rainfall, and arid, which are receiving लेस देन 15 सेंटीमीटर, मतलब उससे भी लेस जो है वो आपका एरिड आ जाता है. सो दिस ड्रॉट प्रोन रीजन्स इंक्लूड द रीजन्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, रायलसीमा एंड तेलंगाना प्लेट्यू ऑफ आंध्र प्रदेश, Karnataka plateau and highlands and interior parts of Tamil Nadu. The drought-prone areas of Punjab and Haryana, North Rajasthan are largely protected due to spread of irrigation in this area. And as we all know about the IGNP, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जो हमारा है IGNP, इसने राजस्थान के नॉर्दर्न पार्ट दैट इज गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड ऑल्सो वेस्टर्न पार्ट दैट इज बीकानेर, जैसलमेर, यहाँ तक इस कैनाल ने क्या दिया है, उन डिस्ट्रिक्ट्स को सॉरी उन एरियाज को जो बिल्कुल ड्रॉट प्रोन है वहां पे क्या दिए, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की है. तो द ड्रॉट प्रोन एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान आर लार्जली प्रोटेक्टेड ड्यू टू स्प्रेड ऑफ इरिगेशन इन दिस एरिया. ये आपको this is all. Now there is one case study is given. Case study, yes, case study is given. Integrated tribal development project in Barmor region. तो बारमोर रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे है, तो अपना हिमाचल प्रदेश में है बारमोर रीजन. और इंटीग्रेटेड इन विच देयर इज अ कोऑर्डिनेशन कंपोज्ड ऑफ कोऑर्डिनेटेड टू फॉर्म अ वॉल. पूरी सभी चीजों को जब हम कलेक्टिवली क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके कोऑर्डिनेट करके जो इंप्रूव करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच. सो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन बारामूला रीजन. द बारामूला रीजन जो है यह ट्राइबल एरिया है. यहाँ पे जो आपकी ट्राइबल जो ट्राइब रहती है कम्युनिटी, दैट इज गद्दी. गद्दी जो है वो आपके वहां रहते हैं. और ये हमने प्राइमरी एक्टिविटीज वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था. ट्रांसह्यूमेंस, वी डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांसह्यूमेंस प्रैक्टिस practiced by the Gadis. Gadis जो है ये कौन सी प्रैक्टिस करते हैं, transhumance. And what do you understand by transhumance? Transhumance, that is seasonal movement of people with their cattle or other grazing animals. उनके साथ seasonal movement, पहाड़ पे माउंटेन में जाना, फिर वापस क्या आ जाना, प्लेन्स में आ जाना, फिर वापस माउंटेन में जाना. So this is the seasonal movement is known as transhumance. So let's look at this case study. Baramura tribal area. Yes, Baramura tribal area comprises Baramura and Holi Tehsil of Chamba district of Himachal Pradesh, and it is a notified tribal area since 21 November 1975. Baramur is inhabited by Gadi. Gadi we already discussed in the chapter primary activities, that Gadi is a tribal community which involved in the practice of transhumance. And transhumance is the movement of people with their grazing animals from the plain to the mountains and from the mountains to the plain during different season in the year. So that Gadis ki practice aapki yes hai. Gadis are tribal community who have maintained a distinct identity in the Himalayan region. Himalayan region, as we all know, that Himalayan mountainous belt जो है हिमाचल प्रदेश कहाँ पे, कौन सा माउंटेनियस रेंज है वहां पे, तो हिमालयन रीजन है. सो दे प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमेंस वी ऑलरेडी डिस्कस. द ट्रांसह्यूमेंस इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल विद देयर कैटल और अदर ग्रेजिंग एनिमल्स एंड कन्वर्स्ड थ्रू मींस वो किस लैंग्वेज में कन्वर्जेशन करते हैं, इन विच लैंग्वेज दे शेयर देयर थॉट्स. कन्वर्स्ड जस्ट लाइक आई एम कन्वर्स्ड थ्रू हिंदी एज वेल एज इंग्लिश with you. मैं आपसे इंग्लिश हिंदी दोनों में कन्वर्सेशन कर रहा हूँ. So these Gadis converse through Gadiali dialect. And dialect, what do you understand by dialect? Dialect we can say a regional language or minority language. Dialect जो होती है वो लैंग्वेज की तरह पूरी डेवलप नहीं होती है, लैंग्वेज से थोड़ी कम डेवलप होती है. और जैसे भाषा और बोली, भाषा is here language and बोली here means dialect. So dialect is a regional or minority language. So Gadiali, that is the dialect of the Gadis tribal community. तो ये ध्यान होना चाहिए. Okay. Now Baramura tribal region.
Baramura tribal region has harsh climate. Harsh climate, the climate which climate is harsh? हार्श हम किसे बोलेंगे? हार्श उस क्लाइमेट को या तो बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म या रेनफॉल सफिशिएंट नहीं होना, ये इस तरह के जो भी क्लाइमेट है, दीज आर हार्श क्लाइमेटिक रीजन. जस्ट लाइक वी स्टडीड इन primary activities also, that hunting and gathering are practiced in the region having harsh climatic conditions, which we discussed about some of the equatorial regions or the Siberian regions. So here, Baramura is also having harsh climatic condition. Yes. Now, low resource base, the resources of Baramura जो है, Baramur का जो resources है वो भी बहुत ज़्यादा develop नहीं है, और fragile environment. Fragile means which easily destroy, which is easily affected or easily destroyed. That is fragile, able, जिसको हम बहुत जल्दी harm कर सकते हैं अपनी activity से. That is fragile environment. So these factors have influenced the society and economy of the region. According to the 2011 session, let's talk about the population now. According to the 2011 session, we all are familiar about the what is the meaning of census, student. We all are familiar about the census. कि क्या होता है census? So census is the official enumeration of the population, and in India it is done after every 10 years. Every 10 years जो है इसको आपका किया जाता है इंडिया के अंदर. census जो है वो होता है 10 years में. Now, yes, so according to the 2011 census, the total population of Baramor subdivision was 39,113, that is 21% per square kilometer. So the population size of Baramor region is 39,113 in year 2011, and the population density was 21% per square kilometer in the year 2011. Okay, so population, what is the difference between population size and population density, which we already know. The population density हम जब calculate करते हैं उसका formula होता है population upon area, means persons per unit area is the population density, and population size, the total person living in a particular territory or the area, that is population size. Okay, तो ये clear होना चाहिए. Okay, now it is one of the most economically and socially backward area of Himachal Pradesh. That's why यहाँ पे tribal development project की need है, because it is economically backward. Economically backward because the resources are not enough. Resources enough नहीं है, resources बहुत ज़्यादा कम है. And socially backward का reason ये है because this is tribal area, and tribes जो होते हैं वो new कुछ भी न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स, न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट नहीं करते हैं. वो काफी ज्यादा स्टैटिक होते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू थिंग्स. They are very static in terms of acceptance of new things. So that's why they are socially also very backward. Historically, the Gadis have experienced geographical and political isolation and socio-economic deprivation. The economy is largely based on agriculture and allied activity. Allied activities here the grazing, such as sheep and goat rearing, animal rearing. यहाँ पे allied activities के अंदर आ जैसे agriculture के allied activities बहुत सारी है. Agriculture है, आपकी जो है dairy farming भी है, animal rearing भी है, लेकिन इनके dairy farming नहीं, sheep और goat rearing. Now the process of development of tribal area of Barmore started in 1970s when Gadis were included among scheduled tribes. So as we all know that in our constitution there are some scheduled caste and scheduled ट्राइब्स. शेड्यूल कास्ट भी और शेड्यूल ट्राइब. और यहाँ पे शेड्यूल का मतलब क्या है? जिनके बारे में कुछ प्लान किया जाए. तो प्लान्ड कास्ट और प्लान्ड ट्राइब्स यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये इनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं. So in 1970s, Gadis were included among the scheduled tribe (STs), and under the fifth five-year plan, the tribal sub-plan was introduced in 1974, and Barmore was designated as one of the 5 integrated tribal development project. और यहाँ पे 1974 में tribal development project start हुआ, and this area development plan was aimed
at improving the quality of life of the Gadi. So ultimately जो इनका target था, that is to improve, that is to improve the quality or the life of the Gadis. उसको क्या करना था, improve करना था. So let's first talk about the latitudinal and longitudinal extent of the Baramor. तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देख लेना. लैटिट्यूडनल में इसकी जो जीपीएस लोकेशन क्या है, जैसे हम किसी भी जगह को जीपीएस देखते हैं तो वहां की लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल हमें पोजीशन मिल जाती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से. So this region lies in 32 degree 11 minute north and 32 degree 41 minute north latitude, and longitudinal extension देखें 76 degree 22 minute east and 76 degree 53 minute east longitude. So total area is 1818 square kilometer. That is the total area of Barmore, and the reason lies between that is the altitude. At what altitude Baramor located? So Baramor located at the height of 1500 meter to 3700 meter above the mean sea level, because as we know that Baramor is located in Himachal Pradesh, and Himachal Pradesh come under the Himalayan mountain range. So डेफिनेटली हाइट पे है तो 1500 मीटर टू 3700 मीटर जो है इसका मीन सी लेवल साइड. दिस रीजन इज पॉपुलरली नोन एज द होमलैंड ऑफ Gadis, because Gadis tribal community is living here. That's why it's home for the Gadis tribal people. So surrounded by lofty mountains, Himalayas. These are Himalayas on all sides. It has Pir Pinjal in the north and Dholadhar in the. These are the some of the ranges of the Himalaya. Dholadhar, Pir Pinjal. These are some of the ranges of Himalaya. And in the east, the extension of Dholadhar. तो इसको confuse नहीं होना है. Dholadhar, Pir Pinjal, ये सारे के सारे इसके क्या ranges range है mountains Himalayas के. Dholadhar converges with Pir Pinjal near Rohtang Pass. There are some passes in the mountains. ये passes जो हैं विंटर के ड्यूरिंग तो क्या है बर्फ गिरने से बंद हो जाते हैं, लेकिन समर के ड्यूरिंग इनसे माउंटेन्स क्रॉस किए जाते थे. पुराने टाइम में जो ट्रैवलर्स भी आते थे वो भी इन्हीं पासेस से आते थे. बोमडीला और काफी सारे पासेस है. तो ये रोहतांग पास के नियर है. द रिवर रवि एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द बुद्धिल एंड द तुंदाहेन ड्रेन दिस टेरिटरी एंड कार्व आउट डीप गोर्ड्स. डीप गोर्ड्स देखिए, रिवर जब भी चलती है तो वो अपने वे में क्या करती है कि इरोजन करती है, और इरोजन करने से डीप गोर्स मींस क्या है, खड्डों को बोलते हैं. बड़े बड़े क्या बन जाती है, वैलीज, वी शेप्ड वैली, डीप गोर्स बन जाते हैं, और वो इरोजन से बनते हैं. सो दीस रिवर डिवाइड द रीजन इनटू 4 फिजियोग्राफिक डिवीजन, दैट इज होली, खानी, तुक्ती एंड तुंदा एरियाज. होली, खानी, तुक्ती और तुंदा एरियाज. Yes, so these are the 4 subdivision of the this Baramor. So Baramor experiences freezing weather conditions, snowfall in winter. That's why the climate is harsh in Baramor. बारामोर का क्लाइमेट हार्श क्यों है, क्योंकि वहां पे फ्रीजिंग वेदर कंडीशंस रहते हैं और स्नोफॉल होता है विंटर के ड्यूरिंग, एंड दैट इज हार्श, एंड that is not present climate. Okay, so its mean monthly temperature in January remains 400 Celsius and in July 26 degree Celsius. So this is about the climatic condition, the area, or the latitudinal and longitudinal extension of the Baramor region that is located in the Chamba district of Himachal Pradesh. तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है ये. So students, आज इसको यही तक आप कंप्लीट कर लीजिए. Okay.